Now our principal sir will present a shawl to our guests of today. Students, as human beings, we need motivation in every step of our life that we take. And who can be better than these personalities who are present before us? And they are here to talk about life, how to lead our life, how to balance our life, and everything. And I know he will excuse me if I pronounce his name wrongly. I'm going to call now Michel Simon, sir. Please excuse if it is wrongly pronounced. Please, sir. Michel Simon. Michel Simon, sir. Please come on the stage and please address our students as well as our teachers. It's okay, it's fine. Yeah. Do they need translation? English? Even the small one? Yes? You understand English? Yes, there? They understand, sir. But maybe the accent may be the issue for them. Okay, I will try to speak slowly. Yeah, that could be better, sir. जहाँ समझ में नहीं आए आप हाथ उठा देना, उसका ट्रांसलेशन हिंदी में आपको करके बताएंगे. Okay, everyone okay with English? And with French? No. It's okay. Okay, so yeah, the topic is about life, the purpose of life, and maybe you have been asking maybe yourself some question, why you are here on earth, and what is the meaning of life, and what you are supposed to do, and where we come from, where we go, and why there is birth and death, and if God exists or not, if exists, what He's doing, and what we should do with Him, and what He's doing with us, and okay, and so forth, and so on and so forth. In life, there is every day we have many questions, and I think one of the purpose of life is to solve the question day by day, and to refine the answer, to find new answer, new definition, new perspective in life, So, but obviously the first question that all the sage and witches and munis in India and priests and philosophers have been asking themselves is, who I am? Because we exist, we are here, I must be someone, but up to now we are not sure about the definition I give to myself, and because according to how I define myself, accordingly I will act, behave, express. It will be my principle, my value, my virtue, my way of interacting with the world, So the essence of making sure you act properly in life is by knowing who you are. And also when we speak about success, success depends on how much quality and
capacity and intellectual power you have in yourself to achieve the success. But you can really develop your talent, capacity, intellectual power when you know who you are. So, in a very simple way for me, I guess, to define who I am by demonstration. You know, we are in the school, and the best way to understand a problem or a theory is to make a demonstration. Yeah? So when you demonstrate something, you can only say it is like that. I accept the theory because the demonstration makes sense. It's clear. There is rationality. There is logic about it. So it's acceptable. So the demonstration about who I am is we are a being of thinking. We create 30,000 thoughts a day minimum. Some people create 60,000 thoughts. We are a being of learning, knowledge, understanding, because we have an intellect. We are creating so many decisions every day. At what time I will wake up, as soon as I wake up, what to do, or to which type of clothes I will carry to go to the school, what I will eat, at lunchtime, and what to study, and in order, what is the most important topic for me. How many decisions we take every day, And we have many relationships with many other classmates and teachers and other people, parents, father, mother, brothers, and so on and so forth. And we express joy, and we express contentment and enjoyment and tranquility and concentration and happiness and more. So if we look at properly, and more than anything else, we are a being of consciousness. I'm conscious. I'm conscious to be here with you, and you are conscious yourself of being here with me. So if we look at properly all of these activity which makes our life, if we don't have conscious, if we don't think, if we don't take decision, if we don't learn, if we don't enjoy, well, there is no life. We don't do nothing, isn't it? So I have to think, I have to decide, I have to learn, I have to express, I have to relate, and I have to enjoy. Then I will say, and make my life good. Obviously, it has to be good thought, good decision, enjoyment, it must be always good, and being conscious. But again, if I look at now, if I analyze, because a student has to analyze everything to understand, to know exactly what it is. If I analyze a thought, if I analyze a knowledge, if I analyze a decision, if I analyze an expression, if I analyze happiness, if I analyze consciousness, what is the common words by which I will describe all these words of activity which comes from me, which I am the creator of it? It is immaterial activity. It's not a thought, consciousness, decision. It's not physical. It's not material. It doesn't have a color. It doesn't have a weight. It doesn't have a shape. It's immaterial. And still, I make fully my life based on this activity, and I am the creator of it. And so, and there is a very famous expression in religion, and the expression is, the creation looks like the creator. Yeah, okay. Okay, there will be some translation. अभी
तक आप लोगों ने समझा? सर ने क्या बताया? बताएंगे कोई? आगे वाले में से कोई बताएंगे? वहीं से बैठे बैठे बताइए, बताइए सर ने क्या बताया अभी तक? कोई भी बताए, हाथ उठाए कि हाँ हम बता पाएंगे, हाथ उठाइए, रेज योर हैंड। सर का टॉपिक क्या था? टॉपिक Come here. Come. Come close. Come close. देखिए, बताइए सर ने टॉपिक क्या था, सर ने क्या बताया? 2 लाइन 4 लाइन जितना आपको समझ में आया हो बताइए, हिंदी में बताइए। Sir explained that every individual in this globe has some questions in his life. They are mandatory that what is life, who we are, and what is our starting, what is our end. And life basically means to answer this question step by step. And a common thing that is required to answer these questions, it is not physical, it is our decision making. We have to make decisions in order to answer these questions. पीछे वाले समझ रहे हैं, सियाने बच्चे, और बाकी जो छोटे हैं वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा बताया, और आप लोग भी छुट्टी लीजिए, इसलिए आप लोग के लिए ट्रांसलेशन है। इस सर का टॉपिक है जीवन क्या है और हमें जीवन कैसे जीना है, हमारा सक्सेसफुल लाइफ कैसे हो, ये सब सर का टॉपिक है। इसमें सर ने अभी तक यही बतलाया कि हम सबके मन में प्रश्न उठता है कि हम जिंदगी में हैं तो कैसे हैं, हमें कहाँ जाना है, हम कहाँ से आए, क्या ईश्वर है धरती पर, अगर है तो वो क्या करते हैं, ये सब प्रश्न हम सबके मन में आता है। आता है या नहीं आता? आता है। तो उसी का जवाब सर दे रहे हैं कि जो कुछ भी हम थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं, एक दिन में एक आदमी 40,000 50,000 भी विचार उसके मन में आते हैं 24 घंटे में, सबके मन में आते हैं विचार। तो ये विचार क्या है? इनविजिबल है, इमैटेरियल है, वो सब क्या है? इमैटेरियल है। तो आगे फिर हम अक्सर से सुनेंगे। yes. no. Yeah. So, I am the creator of all these immaterial activity which makes my life. And so, मैं क्या हूँ? मैं रचयिता हूँ। जो कुछ भी मेरे अंदर में ये सब इमैटेरियल चीजें चलती हैं, उनका मैं क्या हूँ? क्रिएटर हूँ, रचयिता हूँ। अपने विचार मुझे क्या करने हैं, वो उसका भी मैं क्रिएटर हूँ, उसका भी मैं रचयिता हूँ। जैसे सुबह आप लोग उठते हैं तो सोचते हैं स्कूल जाना है, स्नान करना है, कपड़े पहनना है, अपना टिफिन बॉक्स और स्कूल के कॉपी किताब ये सब हमको लेना है, सब सोचते हैं ना आप लोग। तो उसका मैं क्या हूँ? रचयिता हूँ कि मेरे मन में क्या विचार चलना चाहिए। and okay, just now one small question again. Do you like to think? And are you in control of your thought? And how much good your thoughts are and how much you enjoy your thought? It's a question for you. आप सबसे ये प्रश्न है कि आप सब सोचते हैं या नहीं सोचते हैं? सोचते हैं। तो क्या आपके अपने मन में जो विचार चलते हैं वो अच्छे विचार चलते हैं, उससे आप खुश हैं या नहीं हैं, ये बताइए। कभी उदासी का विचार तो नहीं चलता है, कभी कोई सब्जेक्ट भारी लगता है, ये सब्जेक्ट हम कैसे पढ़ेंगे, वैसा विचार तो नहीं चलता है। मैं एग्जाम में पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, ऐसे विचार तो नहीं चलता है। आप अपने विचारों से खुश रहते हैं या कभी स्ट्रेसफुल विचार भी आता है आप लोगों को? बोलिए। जो कहते हैं हाँ हमारे मन में स्ट्रेसफुल विचार आते हैं, कभी कभी हमको टेंशन होता है, वो हाथ उठाइए।
they have a stress. Yes. For exam, for something. चलिए हाथ नीचे कर लीजिए. और जो कहते हैं मैं अपने विचारों से सदा खुश रहता हूँ, मैं हमेशा गुड थिंकिंग करता हूँ, हमको कोई टेंशन कोई स्ट्रेस नहीं होता है, वो हाथ उठाइए. Yes. Those who don't have stress. Yeah, they have no stress. Okay. But at least you know, as soon as you create a thought, make yourself conscious about it and ask yourself and observe if that thought you feel okay, good with that, or is maybe it's creating some little disturbance. At least you know, you have to ask question to yourself. इसलिए जब भी आपके मन में विचार आए तो आपको अपने से पूछना है कि जो विचार मेरे मन में आ रहा है क्या यह मेरे को थोड़ा भी डिस्टर्ब करता है या नहीं करता है. Because you should not wait that you are really stressful to understand that I am on stress. As soon as you have one wrong thought, you should recognize it, say to yourself, stop, and then understand that something is wrong with you in your dealing with the moment, the situation, and so you know that you have to reverse the process, do something else. इसलिए जब कभी आपके मन में स्ट्रेसफुल विचार आए तो आपको क्या करना है, स्टॉप करना है, रुक जाना है और देखना है कि मेरे मन में ऐसे विचार क्यों चल रहे हैं. मुझे जो मेरे जीवन में चल रहा है उसके लिए कुछ और करना होगा ताकि मेरे मन में स्ट्रेसफुल विचार नहीं आए. तो फिर आप और ऑप्शंस तलाशेंगे कि मैं क्या करूं जो मेरे अंदर स्ट्रेसफुल विचार नहीं है. जैसे एग्जाम्पल, आपको एग्जाम के समय स्ट्रेस हो रहा है, कोई सब्जेक्ट भारी लग रहा है, उसका स्ट्रेस हो रहा है, तो आप स्टॉप करना है और जो सब्जेक्ट आपको भारी लग रहा है उसके लिए आपको टीचर से बात करना है, ट्यूशन लेना है, उस पर ज़्यादा मेहनत करना है, फिर आपको सब्जेक्ट हल्का लगेगा, फिर आपका स्ट्रेस दूर हो जाएगा. इसलिए कभी भी मन में स्ट्रेसफुल विचार आए तो तुरंत स्टॉप करना है. समथिंग रॉन्ग विथ माई डीलिंग, जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ उसमें कुछ गड़बड़ी है जिसके कारण मेरे को स्ट्रेसफुल विचार आ रहा है. तो जब आप स्टॉप करेंगे, फिर अपने को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि किस कारण से मुझे स्ट्रेस हो रहा है. फिर आप उसका निवारण करेंगे, समाधान करेंगे. Okay, now I will give you a tips. You know, if usually as a student, if we have stress, is because I don't have enough self-confidence with my learning. So to regain your self-confidence, first of all, is as soon as one lesson is finished, don't rush to the next lesson or speak with your classmate or run to play. Stop and for 3 minutes ask yourself, what did you learn, what did you remember from the class? इसलिए मान लिया आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो, जिसके कारण आपको स्ट्रेस आ रहा हो, तो उसको दूर करने के लिए क्या करना है. आपके यहाँ जो पढ़ाई हुआ है, फर्स्ट चैप्टर पढ़ाई हुआ है, तो आपको क्लास में पढ़ा दिया गया, उतना करने के बाद आपको ऐसा नहीं है कि दोस्तों से बात करने लग जाना है या फिर खेलने चले जाना है. नहीं, आपको फिर से बैठ करके उस फर्स्ट लेसन को रिवाइज करना है, एनालाइज करना है और अच्छी तरह से उसको समझ लेना है ताकि आपके अंदर उसका पूरा कमांड हो जाए, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाए कि फर्स्ट चैप्टर से कुछ भी पूछा जाएगा कभी भी तो मैं उसका अच्छी तरह से जवाब दूंगा. And in the evening, read again what you take your note of the lesson before going to sleep. Then during the night, your brain will work, and when you wake up in the morning, try to think again about what you have learned yesterday. Then you will really imbibe the lesson of yesterday. इसलिए जब शाम को अपने घर जाएं तो शाम को भी बैठ करके
जो दिन भर पढ़ाई हुआ है, आपने नोट्स लिए हैं, उसको आप पढ़ें और रात को भी उसको पढ़ के उसको मेमोरी में रख के सोएं, ताकि रात भर जो आपका ब्रेन है, नींद में भी जब आप सोए रहते हैं तो भी आपका ब्रेन काम करता रहता है, तो वो सारी बातों को अपने मन में रिवाइज करते रहेंगे और सुबह उठ करके भी आएंगे तो सारी की सारी पढ़ाई आपको याद रहेगी। इन द मॉर्निंग आप इम्बाइब कर लेंगे सारी पढ़ाई को। No, during our sleep, we dream, and usually we dream with what has been impacting me the most during my day. So if I give myself the chance to be impacting by my lesson, by thinking, reading, memorizing, intellectualizing the lesson, then I will impact my mind, intellect and brain, and this is what I will dream during the night. Then when it will refresh my mind and brain in the morning, I will be fresh and I will be clear and I will find new answer, new solution about my class, my lesson. जो हम रात को स्वप्न देखते हैं वो किस विचार का आता है? जिसने सारे दिन भर में हमारे मन को इम्पैक्ट किया, प्रभाव डाला, उन विचारों का ही हमारे को रात में स्वप्न आता है। तो इसलिए दिन भर आपने जो पढ़ाई किया, जो आप समझे, जो आप विजुलाइज किए, वो सारी बातें आपके अंदर दिन भर चलेगी, तो रात को आप स्वप्न भी देखेंगे तो वो आपको सारी बातें स्वप्न में नजर आएंगी, और जब आप सुबह उठेंगे तो आप फ्रेश रहेंगे, रिफ्रेश रहेंगे, और सारी की सारी जो मेमोरी में है आपके पढ़ाई चैप्टर, वो सब आपको याद रहेगा। And you know, even in sport, you know, whatever type of sport, those who will become the best is not so much those who practice the sport, but those who visualize internally how to play their game, their sport, internally with their mind and intellect. They repeat up to the point, mentally, intellectually, they reach the perfect movement of their sport. And when they practice, they make it and they are very strong into it and they win. इसलिए स्पोर्ट्स में भी, खेल में भी क्या देखा जाता है? जो अपने मन के अंदर में जितनी बार स्पोर्ट्स को, अपने प्रैक्टिस को विजुलाइज किए हैं, कि मान लीजिए क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं या कोई भी गेम खेलते हैं, तो अपने मन में वो बार बार विजुलाइज करते हैं कि गेंद ऐसे आएगा तो उसको मैं ऐसे खेलूँगा, फुटबॉल मेरे पास ऐसे आएगा तो मैं उसको ऐसे गोल में पोस्ट करूँगा। तो इस तरह से जितनी बार अपने मन में विजुलाइज करते हैं, उतना उनका मन स्ट्रांग होता है, और फिर वो प्रैक्टिस करते हैं और अपने गेम में भी सफलता प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए वो लोग ज़्यादा सफल नहीं होते हैं जो दिन भर मैदान में ही लगे रहते हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल कम करते हैं। वो लोग सफल होते हैं ज़्यादा जो अपने मन में ज़्यादा से ज़्यादा बार विजुलाइजेशन करते हैं और फिर प्रैक्टिस करते हैं और फिर सफल होते हैं। And that is why every hours after any lesson stop 2, 3, 5 minutes, revise up to the point you can tell yourself, I know, it's clear, I memorize, and when you say I know, then you win, then you can use it. इसलिए जो भी लेसन आपको पढ़ाया जाता है, एक चैप्टर पूरा हुआ तो 4-5 मिनट अपने को दीजिए और उसको रिवाइज कीजिए। रिवाइज करेंगे उसको, एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आता रहेगा, फिर आप आगे बढ़ेंगे। And also the thing is, many people in the world, you know, are very lazy with their brain and intellect. They just listen with their mind. And that is why people becomes very old quickly and they are less efficient. But if now you revise mentally, intellectually every hours, then you active your mind, your brain, your intellect, you refresh yourself, and then you will develop by yourself the art of learning. And when you develop, you have to become your own teacher. Your teacher will teach many things. Learn from your teacher and learn by yourself. You have to learn by yourself as well. इसलिए
बहुत लोग लेजी होते हैं, जो मन करता है वही करते रहते हैं, इसलिए लेजी कहलाते हैं। तो हमें क्या करना है, सिर्फ मन की बातों में नहीं चलना है, अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना है। तो इसलिए जो कुछ आपको पढ़ाया जाता है उसको आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, एनालाइज करना है, विजुलाइज करना है, और आपको अपना शिक्षक स्वयं बनना है। टीचर तो बहुत सी बातें पढ़ाएंगे, चले जाएंगे, लेकिन आपको खुद बैठ करके अपने को पढ़ाना है, सीखना है, रिफ्लेक्ट करना है। जो पढ़ाया गया उसको बार बार जब आप ध्यान से देंगे तब आपकी बुद्धि उस पर काम करेगी। And also keep the mantra for yourself, this title. I am successful. I will have success. Success is guaranteed. I will make it happen. I can do it. Always tell yourself this kind of thought. कॉपी है तो लिख लीजिए, ये 2-4 लाइन जो सर बता रहे हैं मंत्र है, ये मंत्र आप लोग लिख लीजिए अगर आपके पास कुछ लिखने का है। नहीं तो सर लोग कहीं नोट करवा देंगे और फिर बच्चों को दिला देंगे। And because the mantra will tell you what I'm supposed to do. The mantra will tell you I have to do something. Just tell you a mantra is not enough. But the mantra will tell you, please do something to make it happen. I have to make it happen. I have to make effort. No, I have to work on it. इसलिए अपने को ये मंत्र बार बार देते रहें कि I will do it, I am successful, I can do it, I must will have do it। तो ये मंत्र आप अपने को हमेशा देते रहें। जितना बार आप दोहराते रहेंगे मंत्र को, तो ये मंत्र आपको फोर्स करेगा काम करने के लिए और आप सक्सेस होंगे। ठीक है, तो ये 4-5 मंत्र जो सर बोले हैं वो आप जरूर सर लोग लिख के दे देंगे। आप लोग रोज अपने को मंत्र रिपीट कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा। And the thing is, more we use our brain and intellect when we are young, more it will work in the future. When we are young, it is said that from 0 to 7 years old, it is the time when our brain gets formation, and obviously up to the teenage. So more I'm working with my intellect by memorizing, by reflecting, or by visualizing my lesson. More my brain is working, more my brain will be strong and with lot of strength. इसलिए जितना जितना आप अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करेंगे उतना उतना आप अपने लाइफ में ग्रो करेंगे। जो 0 से लेके 7 वर्ष तक का जो हमारा उम्र होता है वो सीखने का होता है, ब्रेन के विकास का होता है। तो इस उम्र में आपको एनालाइज, विजुअलाइज करना है, मेमोराइज करना है, अपने मस्तिष्क का विकास करना है। There is an expression which says that we should do everything with the intellect, which means my capacity to understand every moment and what I should do at any moment. Usually people, they act with their mind, something comes they do, or with their habits. You know, I used to act like that. But this both way doesn't work. You have to work with your intellect, and so as you work with your intellect for your lesson, then you will have the habit to work with your intellect for daily life, and then you will have success in life. हम सबको बुद्धि से काम लेना है। बहुत लोगों का जो काम करने का तरीका होता है मन माफिक होता है, अपनी आदत के अनुरूप वो हर कार्य को अंजाम देते हैं, लेकिन वो हमेशा सक्सेसफुल नहीं होता है। तो इसलिए हम सबको ये प्रैक्टिस करना है कि हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, हर कार्य में अपनी बुद्धि को चलाएं और फिर सीखें और फिर आगे बढ़ें। Also, another tips, for success in life. Evening time, no television. Just read some books, read your lesson, and go early to bed, 9, 10 maximum, and
rise early, 5 o'clock. 5 to 7 is the time, the best time to learn, to revise your lesson, so that when you go to school, then you're already alert and fresh mentally, intellectually. You already know many things, so you will enjoy even more your day of learning. इसलिए बुद्धि का विकास करने के लिए, बुद्धि को डेवलप करने के लिए उसको थोड़ा समय देना होगा, उसको थोड़ा ट्रेनिंग देना होगा, उसको थोड़ा प्रशिक्षण देना होगा। तो बुद्धि का विकास करने के लिए क्या करना है? शाम को कोई टेलीविज़न नहीं देखना है। शाम को घर में बैठ के आपने जो दिन भर पढ़ा है स्कूल में, वो आपको रिवाइज करना है, उसको अंडरस्टैंडिंग करना है, समझना है, लर्निंग करना है। और रात को 9 से 10 बजे तक सो जाना है और सुबह सुबह उठ करके 5 बजे उठना है। उस समय हमारा माइंड बहुत फ्रेश होता है, जो हमारी इंटेलेक्ट है वो बहुत ही रिफ्रेश होती है। उस समय आप जो पढ़ेंगे, जो समझना चाहेंगे, वो आपको इजीली समझ में आएगा। तो 5 to 7 आपको अपनी बुद्धि को ट्रेन करना है, प्रशिक्षण देना है। जब आप ये हैबिट बनाएंगे तो आपकी बुद्धि शार्प बनेगी और आप ज़्यादा सीखेंगे, ज़्यादा एंजॉय करेंगे और दिन भर में भी जो आपको पढ़ाई होता है वो सब आपको आसानी से अंडरस्टैंड होगा। जो अंडरस्टैंडिंग का काम है वो बुद्धि का काम है। And at every moment of life, each one of us has a specific task, duty, homework, responsibility. I have to understand what it is for me, and I know that I have to fulfill it totally, fully, and don't do something else which is not connected with my task and duty and homework. इसलिए जिंदगी के हर क्षण में हम सबको कुछ ना कुछ जिम्मेवारी होती है, कुछ टास्क होती है, वो मुझे करना होता है। तो आपको दिन भर में शाम को आपको अपने से प्रश्न पूछना है कि मैं अपना टास्क पूरा कर रहा हूँ क्या? मैं जहाँ हूँ वहाँ मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है? और फिर जो आपका ज़रूरत का चीज़ नहीं है उसको आप छोड़ दें और जो आपका टास्क है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको आप अपनी बुद्धि से अंडरस्टैंडिंग करके, समझ करके उसको आप पूरा करें। Most of the time, that which is interfering with my success is when I waste my time, I waste my thinking, I waste my energy, I mix all of that with my learning, then I get confused, unclarity, no motivation, then stress for sure will come when the teacher say exams, then you freeze and say, oh please, no, God help me, I'm in trouble now. तो कई बार हमारी असफलता का कारण क्या होता है कि हम अपना समय बर्बाद कर रहे होते हैं, हम अपनी विचारों को वेस्ट कर रहे होते हैं, अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे होते हैं। जो पढ़ाया जाता है उस पर भी हमारा ध्यान नहीं होता है, हम कंफ्यूज रहते हैं। और फिर जब एग्ज़ाम आता है तो हम भगवान को पुकारते हैं, ओ भगवान हेल्प मी, आई एम इन ट्रबल। तो ये हमें इस हैबिट को छोड़ देना है। जितनी बातें सर ने पहले बताया कि आपको अपनी बुद्धि को ट्रेनिंग देना है, शाम को कोई टीवी नहीं देखना है, जो पढ़ाया गया चैप्टर में उसको रिवाइज करना है, विजुलाइज करना है, अंडरस्टैंडिंग करना है। सुबह 5 से 7 उठ करके अपनी बुद्धि को और ट्रेन करना है, जो पढ़ाया गया उसको मेमोराइज करना है, अंडरस्टैंडिंग करना है। जहाँ नहीं समझ में आए आप सर से पूछ सकते हैं, आपको मदद मिलेगी, ठीक है? तब आप एग्जाम के समय में आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सबको समझ में आ रहा है? How do you speak to God? Oh God, help me, help me, help me. Or, oh God, thanks for all the help that you have already given me so that I can be a good student. Which type of talking, conversation do you have with God? ठीक है, तो आप भगवान को कैसे याद करते हैं? हे भगवान मेरी मदद करो, मैं समस्या में हूँ, मैं कंफ्यूज हूँ, ऐसे मदद करते हैं, याद करते हैं ईश्वर को? या फिर ऐसे याद करते हैं, भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बहुत अच्छा बनाया, मैंने सारे चैप्टर्स को याद कर लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे याद करते हैं? 2 तरीका है।
एक है कि भगवान मुझे हेल्प करो, मैं बहुत समस्या में हूँ, बहुत स्ट्रेसफुल हूँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरा है कि भगवान को आप ग्रेटिट्यूड से याद कर रहे हैं कि भगवान आपने मुझे इतना सुंदर अवसर दिया, मेरे इतनी अच्छी तरह से पढ़ाई समझ में आई और मैं पूरी तरह से अपने लाइफ से संतुष्ट हूँ, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बोलिए ए या बी, किस तरह से आप भगवान को याद करते हैं? Okay, so you speak like that to God. You express your love and gratitude to God. Very good. Congratulations, Mubaraku. अपने लिए ताली बजाइए। Yeah, and in fact, you should have the pure pride of yourself to tell God, and to the world, you will see, I will become very good. I will show to the world how good I am. You should have that type of thought inside yourself. इसलिए आप अपने मन में क्या विचार दीजिए कि मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना महान हूँ, और भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह से आप अपने साथ खुद को थॉट दीजिए। And then God will be very proud of you, and God will say, my child is so good, I will show my child to the world. और भगवान भी आपसे खुश होंगे और भगवान को भी आप पर गर्व होगा कि मैं अपने बच्चे को सारे विश्व में प्रत्यक्ष करूंगा। जैसे आप कुछ लोगों का नाम उंगली पर जानते हैं ना, पूछे आपसे आप किसका किसका नाम जानते हो मानव के इतिहास में, तो आप किसी किसी का नाम लेंगे। तो आप जब ऐसे थिंकिंग करेंगे, ऐसे कार्य करेंगे, तो भगवान आपका भी नाम उस लिस्ट में रख देंगे। लोग फिर आपके नाम को याद करेंगे कि फलाना आदमी था, इतना महान महान कार्य करके गया। Because God is the father of all souls, and so He can take one of His child and bring His child in front of everyone. That God can do it. Unless and only if I'm becoming very good myself. That also is required from my side and based on my own personal effort. इसलिए जब आप स्वयं के लिए प्रेम रखेंगे और अच्छा से अच्छा बनेंगे, अपना पूरा मेहनत करेंगे स्वयं को अच्छा बनाने के लिए, तो भगवान के पास वो शक्ति है कि वो आपको हजारों लाखों के बीच में से उंगली पकड़ के आपको संसार में खड़ा कर देंगे कि ये देखो, ये मेरा सबसे होनहार बच्चा है, सबसे अच्छा बच्चा है, इसने अपने लाइफ में इतना अच्छा प्रोग्रेस किया। And you have to remember one thing is, any effort you are making will never get lost. There will always be some result. Maybe not so obvious, maybe not so immediately, but the accumulation of the effort that you are making day by day, at some point there will be a click, a movement, a kind of opening, and then something new, something more easy for you will happening, and then you will learn even more faster than you may have never think you can make it happen. इसलिए आप जो कुछ भी आप मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, वो कभी भी निष्फल नहीं जाता है, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। आप जो कुछ भी थोड़ा आप मेहनत कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, एक समय आएगा जो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा और आप खुद आश्चंबित रहेंगे कि इतना अच्छा कार्य कैसे हो गया। तो इसलिए जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो आप मेहनत कर रहे हैं, वो आप करते रहें और आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। So always believe in yourself, always believe in your effort, never lose hope, always think I will make it, always think I have to make effort, then result will come. Believe in the process and be patient no matter. For some it's a fast process, for others it's a slow process, because we are all different, but no matter how much time it takes for someone, keep on building in your own process,
and don't compare yourself with those who are fast and good and the number one, because one day the last one will become number one. But keep on believe in yourself and make it effort so that you keep the aim. I will become number one. इसलिए आपको क्या करना है, अपने में विश्वास रखना है। जो आप मेहनत कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें भी पूरी तन्मयता रखनी है और कभी भी अपने को कंपेयर नहीं करना है। जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, किसी किसी को होता है कि जल्दी उसका रिजल्ट मिल जाता है, जल्दी उनको अचीवमेंट मिलने लगता है और नंबर 1 हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका नंबर पीछे है तो अपने एफर्ट को कम नहीं करें, पेशेंस को नहीं खोएं, आप लगातार मेहनत करते रहें, अपने में आत्मविश्वास रखें और एक समय ऐसा भी आएगा कि आप नंबर 1 बन जाएंगे। इसलिए हमेशा ये अपने को मंत्र देते रहें, आई विल हैव डू इट, आई विल हैव टू मेक इट हैपन। मंत्र जो दिए हैं वो हर रोज स्वयं को दोहराते रहें। अपने किताब के, अपने नोटबुक के फर्स्ट पेज पे ये 4-5 मंत्र याद रखें, लिख के रखें और हर रोज रिवाइज करते रहें। And also, another important aspect, if you really want to have the full success, is when you master something, when you have find a good method for learning, when then please share what you have learned. Find someone, create a group and share with other classmates, because sharing is also making yourself even more clear about what you have learned, and then you will have, and you empty your mind and brain so that your mind and brain can receive more knowledge. So because in life, there is an expression which says, nothing belongs to me. I came empty, I will return empty. So I should not keep whatever knowledge inside myself. Let me be a medium, a canal, an instrument to share knowledge, to empty myself, so that more knowledge can come, so that knowledge can run through my mind, intellect and brain and spread to the world. दूसरा मंत्र क्या है सफलता का? सक्सेसफुल होने के लिए, जीवन में सफल होने के लिए हमें क्या करना है? शेयर करना है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपने जो पढ़ाई किया है, जो चैप्टर आपने पढ़ा है, जो आपने समझा है, आप एक ग्रुप बनाएं, छोटा 10, 20, 25 जितना का बना सकते हैं, और जो आपने सीखा है वो आप अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें। जब आप शेयर करेंगे तो आपको और ज़्यादा उस चैप्टर पर कमांड होगा, आप और ज़्यादा अपने माइंड को एम्प्टी करेंगे तो और ज़्यादा वो रिसीव कर पाएंगे। Okay, just as a conclusion, एक मिनट में पूरा करें। तो जीवन में सफल होने के लिए हमें क्या करना है? शेयरिंग करना है। जो कुछ भी मैंने सीखा है वो मुझे शेयर करेंगे तो उतना ज़्यादा आपको और सीखने को मिलेगा। आप अपने ब्रेन को खाली करेंगे, एम्प्टी करेंगे तो वो और ज़्यादा ज्ञान का उसमें फ्लो रन करेगा। तो हम इस संसार में कैसे आए थे? खाली मुट्ठी आए थे और खाली मुट्ठी जाना है। तो जो कुछ भी हमें इस संसार में मिला है, हम विश्व को दे के जाएं, संसार को दे के जाएं, ठीक है? तो जितना आप देंगे उतना आपके अंदर और ज्ञान का प्रवाह आएगा और आप जीवन में
सफलता प्राप्त करेंगे और ज़्यादा आप सीखेंगे, आपकी लर्निंग और फास्ट होगी, आपकी जो बुद्धि है, जो इंटेलेक्ट है वो और डेवलप होगी। इसीलिए लोग मंदिर में जाते हैं तो भगवान को क्या कहते हैं, हे भगवान हमको सद्बुद्धि दीजिए। मन नहीं मांगते हैं भगवान से, क्या मांगते हैं, बुद्धि मांगते हैं, क्योंकि बुद्धि का काम है अंडरस्टैंडिंग करना, लर्निंग करना, डिसीजन करना, ये सब बुद्धि का काम है। तो इसलिए आप अपनी बुद्धि का विकास करना चाहते हैं तो जो कुछ भी आप पढ़ाई करते हैं वो आप शेयर कीजिए, तो उतना ज़्यादा आपको और सीखने को मिलेगा। इसलिए कहावत है लर्निंग इज क्या है, टीचिंग इज लर्निंग। समझ गए, जितना आप सिखाते हैं उतना आप सीखते जाते हैं, जितना आप दूसरे को टीच करेंगे आप खुद सीखेंगे। इसलिए कहावत है कि जो अच्छा टीचर होता है वो क्या होता है, एक अच्छा स्टूडेंट होता है। जितना आप खुद पढ़ेंगे उतना आप ज़्यादा सिखा पाएंगे, जितना सिखाएंगे उतना आपकी लर्निंग होती रहेगी। And also, remember, God is the giver. When I'm sharing knowledge with others, I'm doing God's task. So God Himself will touch my intellect to learn more, to understand more. It's a law of life, and God follow the law of life. भगवान को क्या कहा गया है कि वो गिवर हैं, दाता हैं, देने वाले हैं। तो अगर हम किसी को भी नॉलेज शेयर कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो हम भगवान का काम कर रहे हैं। तो भगवान की हमें दुआ मिलेगी, मदद मिलेगी और हम जीवन में और आगे बढ़ेंगे। And also, just to finish, as I start, my creation is immaterial. I, the creator, am immaterial, which means I am a soul. The soul, Atma, come from the world of soul, incorporeal. I come without body, without a horse, without a car, without a wife, without children, without money, without anything. So then, and I will go back empty, all that. But I will go back on, or what will be kept with me is knowledge and karma and the sanskars of it. And that, I will remain that eternally. This will remain with me eternally. So this is what is really one of the essence of purpose of life, pure karma, pure knowledge, pure sharing. Om Shanti. तो इसलिए हम सब जो इस संसार में आए तो कहाँ से आए, सोल वर्ल्ड से आए। और हम सब कौन हैं, हम सब इनकॉर्पोरियल हैं। जो थिंकिंग है, लर्निंग है, जो हमको चाहिए, सुख चाहिए, प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, सब क्या है, इमैटेरियल है। आई एम इमैटेरियल बीइंग, दैट इज कॉल्ड सोल, आत्मा। मैं कौन हूँ, अदृश्य हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ और मेरा नाम क्या है, आत्मा। इसलिए हम बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, क्योंकि हम यहीं बैठ करके आंखों से देख रहे हैं। आँख क्या है, लेंस है, मुख क्या है, स्पीकर है। अगर आत्मा निकल जाएगी तो आँख देखेगा, मुख बोलेगा, नहीं बोलेगा। इसलिए मेडिकल साइंस में भी एक क्वेश्चन आता है, वेयर डज कॉन्शियस लाइज इन द बॉडी। चेतना का निवास स्थान इस शरीर में कहाँ पर है, पेट में है, लीवर में है, किडनी में है, हार्ट में है, कहाँ है कॉन्शियस। कॉन्शियस लाइज बिटवीन द हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। इसलिए बाइक चलाते हैं तो कहते हैं हेलमेट लगा के चलाइए, क्योंकि एक्सीडेंट में पैर जाएगा तो कोई बात नहीं है, महीना डेढ़ महीना में ठीक होगा, हाथ जाएगा तो भी ठीक हो जाएगा। लीवर, हार्ट, किडनी में भी ट्रांसप्लांट हो जाता है, दूसरा लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर चोट लगेगा तो उसका फिर कुछ नहीं होता है। तो इसलिए अपना हेलमेट जब भी लगाएं बाइक पर तो दोनों आगे पीछे दोनों लोग हेलमेट लगा के चलें। ऐसा नहीं कि सिर्फ आगे वाले को लगाना है, पीछे वाले को नहीं लगाना। इसलिए आपके घर में भी आपके भाई बहन, पापा मम्मी बाइक पर जाए, हेलमेट नहीं लगाए तो उनको जरूर सावधान कीजिए कि हेलमेट दोनों को लगाना है और दोनों को लगा के ही भेजिए, तभी जीवन सुरक्षित रहेगा। और पहला पार्ट समझ में आया कि मैं कौन हूँ, हु आई एम, हु इज लर्निंग, who is developing their intellect, who has to perform actions. I am immortal being, human being। दो शब्द आता है, human plus being। human means body, human का ग्रीक वर्ड है, उसका लिटरली मीनिंग क्या होता है, सोइल, मिट्टी। और being का लिटरली मीनिंग क्या होता है, फोर्स, एनर्जी।
तो जो बीइंग है वो मैं आत्मा हूँ और ये शरीर है, तो मैं मनुष्य आत्मा हूँ। तो मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, जैसे आप लोग बचपन में पढ़े हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। कैसे हैं? लिटिल स्टार के समान, जैसे आकाश में सितारा होता है। अप एबव डबल सो हाई, कहाँ से आए हैं? उस घर से आए हैं जो ऊंचा से ऊंचा है, जिसको परम धाम ब्रह्मलोक कहते हैं। और लाइक ए डायमंड इन द स्काई, तो जो परमात्मा है वो भी कैसा है? सितारा है और लाइक ए डायमंड है। हम सब वहीं से आए इस दुनिया में, फिर हम सबको वहीं जाना है। तो इसके लिए अपने मन को, बुद्धि को और अपने जो संस्कार है वो प्योर कर्म करना है। मन में प्योर थॉट्स लाने हैं, बुद्धि से डिसीजन लेकर के प्योर कर्म करने हैं, अपने संस्कारों को अच्छा बनाना है। जितना हम कर्म अच्छे करेंगे हमारे संस्कार अच्छे बनेंगे। इसलिए हम कहते हैं महान आत्मा है, ये पुण्य आत्मा, ये धर्म आत्मा। अगर कोई गलत कर्म करता है तो कहते हैं पाप आत्मा। तो इसलिए ये संस्कार हमारे साथ जाएंगे। मन, बुद्धि, संस्कार ये हम आत्मा के अंदर होती है। जैसे एक एटम में कौन कौन सा चीज होता है? 3 चीज एटम के अंदर, बोलिए। हाँ, उसी तरह से हम आत्मा के अंदर 3 पावर होती है। जैसे लाइट है, करंट है, तो बल्ब चल रहा है, फैन चल रहा है, और भी कुछ हम चला सकते हैं। उसी तरह से आत्मा पावर है और उसके अंदर ये 3 प्रोसेस चलती है। पहला है माइंड का पावर, जिसको थिंकिंग पावर कहते हैं, और दूसरा इंटेलेक्ट का पावर, जिसको डिसीजन पावर कहते हैं। तो ये डिसीजन पावर ही हमारा मेन फैक्टर है। सही डिसीजन लेंगे, सही काम करेंगे, तो हमारे जो संस्कार हैं, जो हमारे हैबिट्स हैं, वो अच्छे बनेंगे। ये हमारे साथ चलने वाले हैं। इसीलिए किसी का जन्म होता है तो बहुत अच्छा घर में जन्म होता है तो कहते हैं अच्छे कर्म किए हुए हैं, और किसी का बहुत जन्म लेते ही बहुत दुख तकलीफ होता है, बहुत सुई लगता है तो कहते हैं देखो कैसा कर्म करके आया, अभी जन्म हुआ नहीं, इतना तकलीफ हो रहा है। तो ये संस्कार हमारे साथ जाते हैं। तो मन, बुद्धि, संस्कार ये हम आत्मा के अंदर होते हैं। ठीक है? Together say, I am okay. So 1, 2, 3. I am okay. I am okay. I am okay. Mubaraku. सबको मुबारक हो। Hello. All the students, please stand up on your seat. We'll have a photograph with our guest.